Students, in the last class we were discussing about atomic models of an atom. So in the last class we were discussed about that there is J.J. Thomson plum pudding model. Up till now we know that atom is made up of electron, proton and neutron, and we will try to know that how electron, proton and neutron are present in an atom. The first attempt was done by Thomson's, in which he has considered that the negatively charged electrons are present as plums and positively charged is present as pudding. And this you can say also watermelon model. In this model, watermelon model, he also says that the seeds in the watermelon is equivalent to electron and all the other part is equivalent to positive charge. But this is a great failure of by J.J. Thomson. And what are the limitations? The limitations is that positive and negative charge cannot remain scattered as such, because there is some kind of attraction forces, okay, some kind of electrostatic forces if there are two charges. Okay, now we have to move on to the next model, which is Rutherford model. And Rutherford first done an experiment which is known as Rutherford scattering experiment. For that he used a radioactive element, and that radioactive element can radiate alpha rays which are passed through a gold foil. Okay, and these radioactive material is put in a lead block, and these rays are try to pass through a slit, and behind that gold layer there is a fluorescent screen, zinc sulfide screen is available, movable screen available. So what are the findings of that particular person, that Rutherford? He found out that some rays passed straight, or most of the rays passed straight. Some rays were deflected through small or large angle, but very few rays are rebound back. Okay, now the most important thing is most of the rays pass straight. This is most of the rays are passed straight, and some rays are deflected through small angle and large angle, and very less rays rebound back. Okay, next is what are the conclusion from him? Now he proposed the model on the basis of his experiment done on gold foil. He said that most of the space in an atom is empty. Why? Because most of the rays passed it. Very first conclusion drawn and apart is given by Rutherford is most of the space in atom is empty. Okay, now if he consider that some rays or very few rays rebound back, or there is a deflection, and the deflection is due to something in the center, and that is a very high charge or very high mass body, and that very high mass body at the center of atom is known as nucleus. And nucleus is a positively charged body. So according to Rutherford, the structure of atom is similar to solar system. You know what is a thing and what is a very few drawback or limitations of Rutherford model, that he has considered that atom is like, if we say nucleus at the sun, and all other planets or electrons are considered as the planets which are revolving and rotating around that particular sun. So he has considered that nucleus is a positive charged body which is very small in size and which is surrounded by electrons. And basically what he said, that it is like that if you are sitting and you are you are having nucleus in your hand, then up to 5 kilometers there is not a single electron, because most of the rays pass straight through the gold foil. His conclusion was, but this is not true, and this is not true that Rutherford structure of atom is similar to solar system. Now he said that nucleus is a positive charge entity which is present as extra part of electron are present. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. नेक्स्ट, he failed to explain that the stability of atom, one of the largest
drawback or limitations of Rutherford model is that he considered it as similar to solar system. According to electromagnetic theory, if there is a charged body revolving in a circular path, it continuously emits energy. Like if we say that positively charged nucleus is surrounded by negatively charged electron, and if it start revolving around it, as the planets are revolving around sun, then they radiate energy or emit energy and shorten its path as shown in figure. If the electron radiate energy, then the path is shortened and shortened and shortened, and in a situation come where the electron fall on nucleus, and if the electron fall on the nucleus, that means the atom is not stable, which is not true. As we know that electrons are also charged body revolving in circular path, so they should emit energy and shorten its path. As a result, they should finally fall in the nucleus, but this doesn't happen. Atom is a very stable entity. Okay, next we move on to what are some definitions related to the atom, and this after these limitations there are few phenomena which you have to discuss, which said that light is not of single nature, light is having dual nature, and that dual nature of light means that light is wave nature and also as particle nature. Wave nature and particle nature are described by many phenomena that will say that light is always has duality in nature. Duality means दो nature की होती है भाई. Okay, so basically first we discuss all these phenomena and all other things, and then we move on to Bohr's model of atom, which is the most successful model to describe all the stabilities and other things of the atom. Apart from that, we will discuss about modern atomic model also, which will remove the limitations of Bohr models. Next is what is atomic number? Atomic number is basically the number of protons present in an atom. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी एटम में, उसे आप बोलते हो एटॉमिक नंबर. एंड यू नो व्हाट, try to remember this thing, that number of proton is equal to number of electron. Atomic mass is number of nucleons. So nucleons किन किन को कहते हैं भी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ atomic mass बोलते हो. Atomic number is the number of proton and atomic mass is number of proton plus number of neutron. अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अभी? एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लिखते हैं. ये हमने आगे एक फिगर में आई हैव रिप्रेजेंटेड इन अ फिगर. एटॉमिक नंबर लिखते हैं और मास नंबर लिखते हैं. ओके, नाउ दिस इज इट. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वी आर राइटिंग Z as atomic number, A as mass number. In case of sodium, सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है अभी. दिस इज Na11. कई बार इसे ऐसे भी लिख देते हैं, 23 is its mass number. So 11 is atomic number and 23 is its mass number. This is a representation as given. E is representing the symbol, mass number above and atomic number below, as subscript and as superscript. Next is what are isotopes, isobar, isoelectrons and isotones. Isotopes are those elements. There are a total of 118 elements in the periodic table, out of which 94 elements are natural occurring and others are man-made, synthetic. So there are few elements which have same atomic number but different mass number. Just try to try to understand the thing. Atomic number is same, mass number is different. These are known as isotopes. As shown in as an example, that hydrogen can exist as 3 isotopes. This is known as hydrogen, deuterium and tritium. This is tritium. Hydrogen 1 with 1 atomic number and 1 atomic mass is known as hydrogen. 1 atomic number, 2 atomic mass is known as what? Deuterium. And 1 atomic number and 3 atomic mass is tritium. This H2 is also try to make heavy water which is deuterated water. इसको आप D2O के नाम से भी लिखते हैं. जैसे H2O is the formula of simple water, D2O is the formula of heavy water. Next is isobars.
Isobars are those elements which have same mass number but different atomic number. Now try to understand this thing that atomic mass has to be same but atomic number has to be different. अच्छा, मैंने भी आइसोटोप का सेकेंड एग्जाम्पल ऑक्सीजन 16, 17 और 18 है. ऑक्सीजन कैन आल्सो एग्जिस्ट एज आइसोटोप. देयर आर few other examples that chlorine can also exist as isotopes which have same atomic number but different mass number. Isobars में same mass number होता है but atomic number different होता है. जैसे सोडियम और मैग्नीशियम हो गया भाई, दोनों का मास तो 24 है और एटॉमिक नंबर 11 और 12 है. जैसे आर्गन और कैल्शियम हो गया भाई, इन दोनों में एटॉमिक मास 40 है और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है. नेक्स्ट आर आइसोटोन्स, एज द नेम सजेस्ट, विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम हो. C6N7O8 are the species which has same number of neutrons. Apart from this, there are few examples. This is not the correct example. There are few examples. You have to calculate the neutrons in that example. Neutrons अगर same number हो तो उसे बोलते हो isotons. Isoelectronic species वो species है जिसमें same number of electron. Iso means same, electronic means electrons. जैसे O7 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ng+2, Al+3, इन सब में भी 10 इलेक्ट्रॉन है. सो दीज आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. नाउ द क्वेश्चन इज calculate the number of protons, neutrons and electrons in 8035 bromine. 8035 means 80 is atomic mass and Z atomic number is 35. नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है भाई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना आ जाएंगे 35. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? आपको पता है दैट मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अब अगर टोटल मास 80 है और उसमें से आप एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज 45, जैसा कि इन्होंने करा हुआ है. Okay, so you can calculate the number of protons, neutrons and electrons just by seeing the formula. Next is what is dual nature of light and what are development leading to Bohr's models. Okay, you know what dual nature of light? Dual nature of light suggests that light is not of material nature. Light is also of wave nature. Wave nature मतलब आप भी जैसे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में स्टोन फेंकते हो तो रिपल्स जनरेट होते हैं. यू हैव टू थ्रो इट इन अ वे. तो रिपल्स जो जनरेट होते हैं वो रिपल्स जो हैं वो वेव लाइक होते हैं. तो जैसे उसमें रिपल्स जनरेट होते हैं वैसे ही लाइट जो हमारे पास आती है दैट इज हैविंग वेव नेचर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज आल्सो हैविंग व्हाट? दिस इज आल्सो हैविंग मटेरियल नेचर. जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की, तो ये दो फिनोमिना है जो कंसिडर करते हैं कि लाइट का वेव नेचर होना चाहिए. बट interference and diffraction, they are considering that light is of particle nature. So by considering these 3-4 phenomena, that has to be known as that light is of dual nature, particle nature and wave nature. Okay, so जो फेलियर था रदरफोर्ड मॉडल का, उसमें जो मेन फैक्टर जिन्होंने किया वो था भाई हमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कंसिडर करना था. अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो जिस टाइम में बोर मॉडल स्टडी करेंगे उस टाइम आपको बताऊंगा. बट बिफोर स्टडिंग वी नीड टू लर्न व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड. लेट अस से दैट ड्यूल नेचर तो ह्यूजेंस नाम के एक साइंटिस्ट से जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी भाई, जिन्होंने ये बताया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है. वेव मैंने बता दिया, जैसे आप किसी भी वाटर बॉडी में स्टोन फेंकते हो, एक तरीके से फेंकना है जिससे रिपल्स जनरेट होते हैं भाई. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. According to this theory, that energy is emitted and absorbed continuously in the form of radiant energy. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस थ्योरी ने बताई कि जो लाइट है और रेडिएशन जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं. Electromagnetic theory considered that electric field and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to the propagation of wave also. These waves are travel in
अ मीडियम आल्सो इन अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी जा सकते हैं अभी। और इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो सकती है, एमिट मतलब निकलना, एब्सॉर्ब मतलब एब्सॉर्ब करना, in the form of radiant energy. So electromagnetic theory, very most wanted explanation of electromagnetic theory is electric field and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to the propagation of wave. This is the most important point for an electromagnetic theory. And the radiations travel with speed of 3 × 10⁸ meter per second, and it can travel in medium as well as in vacuum also. Next is what are characteristics of a wave. If we are considering that a wave is traveling in a medium, so like that, so what is its wavelength? Wavelength is the distance between two crust and two trough. जो ये distance होती है भाई, these are known as crust and troughs. So the distance between successive crust, so ये crust जो है इनके बीच में जो distance है total, इसको आप बोलते हो wavelength. Frequency क्या होती है? Frequency is a word come from frequently, मतलब कितनी waves एक सेकंड में एक स्पेस से जा रही है उसे आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ हैज द यूनिट ऑफ लेंथ भी, जो लेंथ के यूनिट होते हैं वही होते हैं पिकोमीटर, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। ओके, ये मीटर आएगा भाई, और ये इन्होंने इसको छोड़ दो। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। इनको हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करा था, दैट डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो एक्टो, उनको आप याद कर लेना। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की इसकी मेन पोजीशन से, उसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। एम्पलीट्यूड बेसिकली हमें बताता है अगर वेव जो है ऐसे जा रही है, तो वेव ऐसे जो जा रही है उसको डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी ये मेन पोजीशन थी, उसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में से जितनी वेव्स जा रही हैं उसे आप वेव नंबर बोलते हैं। सो देयर आर 5 थिंग्स। वन इज वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड ट्रफ, जो अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट होते हैं उसे आप क्रस्ट ट्रफ बोलते हो। फ्रीक्वेंसी, कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही हैं। वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन। वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में डालता हूं, तब आप इसे बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज, इफ वी पुट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको आप याद रखने के लिए एक चीज ध्यान रखना, दैट GX UVIMR। ओके, GX UVIMR, इसमें वेवलेंथ इंक्रीज होती है भाई, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। G फॉर गामा रेज, गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर UV अल्ट्रावायलेट रेज, एंड V फॉर विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज भी हमारी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ। GX UVI इंफ्रारेड, M माइक्रोवेव्स, और जो लास्ट वाली वेव्स है भाई वो क्या है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो FM यूज करते हैं, AM और लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं भाई, अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं। सो GX UVIMR, गामा रेज, एक्स रेज, UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया आपका, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स and radio waves. These are the electromagnetic radiations arranged in increasing wavelength and decreasing frequency. And this is the most important topic, because most of the exams and most of exams, the people will ask you that arrange the following radiations in increasing wavelength or decreasing frequency, or decreasing wavelength or increasing frequency. So GX UVIMR में आपके पास वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई?
डिक्रीज होती है. ओके. Next, we will discuss that what are limitations of this theory. This theory is considering that light is come to us in electric field and magnetic field as wave, but there are few theories which explain that light is also having material nature. And one of the best method of representing that light is having radiation is black body radiations. Second is photoelectric effect. This is given by Einstein. The variation of heat capacity of solid at different temperature and the line spectra. These things we will discuss one by one, and these are basically limitations of electromagnetic spectrum. Okay, now we will discuss other things in the next lecture.